Yeah. आओ मैं बताऊं तुम्हें राज की बात, तुम्हारे हाथ एक खजाना लगे रातों रात। कहानी नहीं लड़के अब तो ये हकीकत बन गई है, पढ़ना लिखना अब आसान, दुनिया आगे बढ़ रही है। तो इंतजार कैसा, अपना मकसद तुझे याद, दुनिया का हर एक जवाब जैसे रखा तेरे हाथ पर। बदलो अब अंदाज थोड़ा, बदलो ये पुरानी रीत, आगे दुनिया से रहना है, पक्की है तुम्हारी जीत। मकसद है तुम्हारा के कुछ बन के ही दिखाना है, मकसद है हमारा सारी दुनिया को सिखाना है। अब रहा ना दौर वो, अब नया दौर आना है, दुनिया को बता दो अब ये मकसद का जमाना है। ये दौर है तुम्हारा, मकसद है तुम्हारा, उठे कलम लिखे वक्त जैसे सब है तुम्हारा। एक वक्त एक आवाज देखे सब खोले राज, बदलेगा इतिहास, नया दौर नई साज। कोई भी सवाल हो जवाब मेरे पास, कामयाबी की खुली हुई किताब मेरे पास। चाहे कोई भी हो मसला, कोई भी हो बात, रखा एक एक चीज का हिसाब मेरे पास। खान on the beat, hey. Hi dear students, how are you? Hoping you would all be fit and fine. My name is Zafar Sahab and I'm your English instructor here. कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी? नरम गरम लगता है मुझे, मगर अब टाइम बहुत कम है, सिर्फ एक ही महीना रह गया है और फिर इन द मंथ ऑफ फेब you are going to have a big showdown. You have a big fish to fry. So be more serious so that you may reap good results. Today's topic is transitive verbs and intransitive verbs. Transitive verbs and intransitive verbs are very much linked with active voice and passive voice. Now, you must be realizing the importance of it. I'm going to shed more light onto it as time progresses. Let's switch to the next slide. IBA LUMS entry test paper. This slide gets me reminded with one of the sayings. If you want to have an omelette, you have to break the egg, and not to the wise. The main topic of today is transitive verbs and intransitive verbs. But before we study transitive verbs and intransitive verbs in detail, I'd like to shed on active voice and passive voice to a certain extent in order to lay ground so that you may understand in a better manner. You know, we are not taught passive voice. We are taught conversion. If you look at the past papers of grade 9, grade 10 and intermediate, you are going to find a question in grammar section, convert from active voice to passive voice and passive voice to active voice. Our students memorize the formation and get through the exams. This is why our graduates and undergraduates find it difficult to use passive voice accurately. Let me tell you the importance of passive voice. I have seen many graduates and undergraduates using a blunder, making a blunder in the use of passive voice. They normally use object instead of subject and vice versa. If you make this wrong, you turn shopkeeper into customer, judge into criminal, son into father, and murderer into murdered. Let me tell you in Urdu. अगर आप ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लगा दें और सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लगा दें, पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हो, तो आप कातिल को मकतूल बना देते, जज को मुजरिम बना देते, दुकानदार को गाहक बना देते हैं और बाप को बेटा बना देते हैं। उर्दू में एक मुहावरा है, उल्टी गंगा बहाना, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स. इफ यू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, you sink the whole ship, and the meaning of your sentence quite disturbed, and they stand nowhere.
So after today's lecture, I hope that you are not going to commit this wrong. So let's get down to know the reasons to use active voice and passive voice. Reason to use active voice. We use active voice when we have subject important or we need to emphasize action. Sorry, subject, doer. Now, as this is the example, people speak English in various countries. You see people in green text here. People are subject, or rather is. Here subject is important, so we have used active voice. If we look at the next example, mechanic is fixing the car. Mechanic is a doer. So here doer is important, so we have practiced active voice. If we go to the next slide, that is all about passive voice. Reasons to use passive voice. There are two reasons to practice passive voice. First is just like active voice. When we have object important, we practice passive voice. And the second reason is a bit technical. We practice passive voice when we need to make the tone of the sentence softer. Perhaps you may not understand. You are going to understand this through example. Example is something, which makes us understand better than definition. So let's get down to definition. Examples. The first example is English is spoken in various countries. The word English is object. That is written in green text. You see? And English is object. Here we have object important. So we have used passive voice. Let me get down to the next example. Fruits are sold in the mart. Here fruits are object. So we have used passive voice. Had we had subject important, we would have used active voice here. Now, that has to do with the first example. When we have object important, we use passive voice. Let's get down to the second one. We need to make the tone of the sentence softer. Let me give you a practical example. Suppose you run a business and you have got two clients and both of them have to make payment within a specified time, and the time lapse. Both of them have not made payment yet, and you have to write them separately. Client A and client B. You write to client A, you have not made the payment yet. This is active voice and you are making your client responsible for that. And he may feel guilty. When one feels guilty, he becomes angry. So this sentence is not suitable because you may lose your client with wrong sentence. It's not that wrong. It's a normal one, but it's not gentle. So client A may be angry because you are making him directly responsible that he hasn't made payment. That makes him angry. And you have written to client B, payment has not been made yet. Here you are emphasizing action, not the person. So he may not feel guilty, or you are not making your client B responsible for that. So the sentence in passive is more gentle in comparison with the sentence you have used for client A. Let me give you another example so that you may understand in a better manner. Somebody has beaten your younger son or brother, for example, and you go to him, ask him, why did you beat my brother? Here you are directly making him responsible. Of course, he'll be angry. But if you use a sentence, why was my brother beaten?
Here, you are not making the person responsible directly. You are not blaming him. So he may not mind it. Now, it is proven that passive voice are also used to make the tone of the sentence softer. This is why they are used in newspapers, magazines, novels, formal addresses, and of course, business letters, because we are not harsh on such occasions. So I hope you would have developed your understanding about active voice and passive voice, which is not normally known. Now, our main topic, transitive verbs and intransitive verbs. First, we discuss transitive verbs. Transitive verbs are those verbs which require direct object in order to clear their sense, and they are also used in passive voice. And the same goes here. Transitive verbs are accompanied by direct object in order to make complete sense, and they are practiced in passive voice. For example, serve, understand, write, supervise, lend, raise, appoint, and the last word is prepare. Let's put few of the words into practice and find out whether they are transitive or intransitive. The first verb is serve. She serves her country. And you see, her country is direct object that is under the shadow of yellow color. Her country is direct object. If I omit this direct object from the sentence and say to you, she serves, will you understand? Of course not. This is incomplete. You will not understand. If I practice only she serves, you would think, what does she serve? Unless I place direct object. Here, serve requires direct object in order to produce complete sense. Now, serve is proven to be transitive verb because it requires direct object to complete the sense. Let's get down to the second one. Suhaib is understanding the topic. The topic is direct object. If I remove direct object, that is topic, will you understand? If I say Suhaib is understanding, you would be wondering what he is understanding, whether he's understanding lecture, topic, or somebody. So it requires direct object to complete its sense. Understand? Here, understand requires direct object. Now it is understandable. Example number 3. Aleem Dar has supervised the World Cup final. The World Cup final, which is under the shadow of yellow color, direct object. If I keep this direct object away and say only Aleem Dar has supervised, will you understand? Of course not. You won't understand. You may be wondering what he has supervised, whether he has supervised the project or person or something else. Now, I place the direct object back. Aleem Dar has supervised the World Cup final. So, World Cup final is direct object that proves supervise requires direct object to complete its sense. So, it is proven to be the transitive verb. Now, last example of this slide. The managing director is going to appoint a content writer. Here, a content writer is a direct object, receiver of the action. If I do not use a content writer and practice the sentence without direct object, how would it look like? The managing director is going to appoint. You would wonder, who is managing director is going to appoint? Whether he is going to appoint a peon, assistant manager, assistant director, or supervisor, or whom? Now I place a content writer back.
The managing director is going to appoint a content writer. That is also proven that appoint needs direct object to produce clear sense. So all these verbs mentioned in this slide, serve, understand, write, supervise, lend, raise, appoint, prepare, are transitive verbs and they can be used in passive voice. Transitive verbs are those verbs which can be used in passive voice and they require receiver of the action in order to complete their sense. Let's jump to the next slide. There comes transitive verbs. Intransitive verbs rather. Intransitive verbs are those verbs which do not require a direct object to clear their sense. They complete their sense without direct object and they cannot be used in passive voice. For example, yawn, stand, go, sleep, travel, bleed, die, ran. Let's use few of these words into our examples. The first example is Sophia is yawning. As you can see in the picture. Does it make sense? Yes, it does. It does not require direct object to complete its sense. Sophia is yawning. That gives complete understanding, complete thought. Second example, the team has been standing in the field. As you can see in the picture, perhaps few of you think that in the field is direct object. No, this is no way a direct object. This is basically prepositional phrase. Prepositional phrase. It's not direct object. The team has been standing in the field. It does not require a direct object to complete its sense. It gives complete sense without direct object. So yawn and stand. Both of them are proven to be intransitive verbs and they cannot be used in passive voice. We are going to learn why they are not used in passive voice as the lecture goes on. Next slide. They go to office. There is a big ambiguity with go. People think that go is transitive verb, whereas this is in fact intransitive. The sentence is they go to office. Many people reckon that to office is object. This is not object, this is direction. This is prepositional phrase. So go is intransitive verb. It does not require direct object to complete its sense. Had there been direct object, then go would be transitive verb. So go generates its complete sense or meaning without direct object. And to office, to the market, to park, these are prepositional phrase and they show direction basically. The baby has slept well. Here, few of you may be thinking that well is direct object. No, this is adverb. Adverb. Adverb is something which qualifies the meaning of the verb. And this is not direct object. Here, sleep does not require direct object to complete its sense. Without direct object, it generates its complete sense and this is well understandable. How to recognize transitivity and intransitivity of verbs? A big question. Many of undergraduates, struggle whether the verb is transitive or intransitive. So we are going to solve this mystery today. Say the subject and verb followed by the question, what and whom? I give you a yardstick. What and whom? What and whom? These are two tools. You see, both of them are yardstick. Here,
I have written in Urdu as well, पैमाना. पैमाना जो होता है किसी चीज को जो है नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, गैज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ये टूल्स हैं. तो what and whom, keep it in your mind that you are going to practice only whom without preposition. Normally we practice whom with preposition like with, on, for, from, against, so on and so forth. So if you place preposition with that, it won't function. It will function here in this context when it is used itself, whom, without preposition. So what and whom are the yardstick? They are the touchstone. टचस्टोन पता है आपको? टचस्टोन कहते हैं कसौटी को. अगर आप सुनार के पास जाएं सोना लेकर बेचने के लिए, तो वो आपको ऐसे ही पैसे नहीं देगा. वो किसी को भेजेगा या खुद कसौटी के ऊपर चेक करेगा कि इसमें कितना खोट है और कितना प्योर है. उसके बाद जो है उसकी कीमत आपको देगा. तो वो जो है बेसिकली एक पैमाना होता है, वो यार्डस्टिक होती है, वो कसौटी होती है, वो टच स्टोन होता है. तो यहां पर व्हाट एंड हुम जो है, दे आर बेसिकली टच स्टोन्स, and through which we are going to recognize whether the verb is transitive verb or intransitive verb. The verb is transitive if the answer is direct object. Yes, here you see direct object and the verb is transitive. If a verb carries direct object, that means this is transitive verb. Let's have few examples. The verb is teaching or teach. Let's practice this verb in this sentence. She is teaching English. English is under the shadow of yellow color, and that is direct object, and you must be recognizing this, I think, easily. Let's place what with that. She is teaching what? Are you understand? Yes, of course. Let me place what here in this sentence. What is she teaching? If I ask you what is she teaching, won't it be understandable? Yes, it will. You will understand this and of course respond. That means what fits like a glove with teach, and teach is transitive verb, and that can be used in passive voice. Let me give you another example with the same verb. She is teaching them. Here them is direct object. Let's place whom with it. She is teaching whom. Don't you understand? Yes, you well understand this. Let's practice whom in this sentence as we did this with the first sentence. Here, whom is she teaching? Don't you understand? Yes, you not only understand but also respond. That means it gives clear sense. So here we have placed what and whom with the verb teach, and both of them make sense. So it is proven that teach is transitive verb, and we can freely use this verb in passive voice. Now let's practice the verbs which you have already gone through in previous slides. Serve, understand, supervise, and appoint. Let me remind you this. Here in one of the previous slide, yes, here comes the slide. Serve, understand, write, supervise, lend, raise, appoint, prepare. I have used these verbs so that you may understand in a better manner. She serves her country. Let's put it with what. You can see the arrow. What does she serve? If I ask you what does she serve, won't it be understandable? Yes, it is. It is understandable. So serve is proven to be transitive verb. Suhaib is understanding the topic. What is Suhaib understanding? Doesn't it make sense? Yes, it makes full sense. So what is placed and functions well
with understand. So understand and serve, both of them transitive verbs. Alim Dar has supervised the World Cup final. What has Alim Dar supervised? When I ask you what has Alim Dar supervised, so you would say to me in reply, Alim Dar has supervised World Cup final, Alim Dar has supervised hundreds of ODIs, and Alim Dar has supervised many test matches and of course ODIs. So supervise is transitive verb, that is proven. The managing director is going to appoint a content writer. Whom is managing director going to appoint? So here, whom makes a lot of sense. So what and whom we have placed with verb, and they tell us whether the verb is transitive or intransitive. So all these verbs are transitive verbs, and we have proven these verbs as transitive verbs with the help of what and whom, which are yardsticks. There comes a slide of intransitive verbs. The verb is more. More means feel sorry. If you are good at vocabulary, you must know a word lament. Lament. Here, lament. Lament. So lament, feel sorry, mourn are synonymous to one another. इसका मतलब होता है सोग मनाना, मातम करना, इजहार अफसोस करना. So they are mourning. The verb mourn does not carry direct object here, and without direct object it gives clear sense. अगर मैं ये कहूं they are mourning, वो अफसोस कर रहे हैं, वो मातम कर रहे हैं, वो सोग मना रहे हैं, इस सेंटेंस को या इस वर्ब को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है. ये अपनी साथ में एक मुकम्मल सेंटेंस है, और जिससे हमें ये पता चलता है कि इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बगैर ही ये अपने मानी जो है वो दे रहा है. नाउ लेट्स पुट द वर्ब mourn into yardstick. If I use what with mourn, what are they mourning? Does it make sense? No, it's rather nonsense. It's nonsensical. It gives awkward meaning. Let's put it into Urdu. What are they mourning? वो क्या सोग मना रहे हैं? तो वो क्या सोग मना रहे हैं हमने कभी प्रैक्टिस नहीं किया ये. So it is awkward and it has no answer. Let's place whom with it. Whom are they mourning? वो किसे सोग मना रहे हैं? किसका तो हो सकता है, मगर वो that is different context. Whom are they mourning? वो किससे सोग मना रहे हैं? You never practice this. तो this is also awkward. तो जहां पर मीनिंग ऑकवर्ड हो, इलॉजिकल हो, नॉनसेंसिकल हो, वो उधर जो है वो रिप्लाई भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो अंडरस्टैंडेबल ही नहीं है. तो इस तरह व्हाट एंड whom do not fit with intransitive verb. So here mourn gives awkward meaning. Awkward meaning. When the meaning is awkward, we do not need to respond. Here at the bottom, what is mentioned? No direct object, no answer. With what and whom. So now mourn is proven to be intransitive verb that does not require direct object, and we cannot use it in passive voice. Here, let's have more examples. Yawn, stand, and go. She is yawning. If we place what and whom with yawn, what is she yawning? वो क्या जमाई ले रही है? Of course not. This is nonsensical. Whom is she yawning? वो किसे जमाई ले रही है? That also not standing anywhere. So this verb is intransitive verb and there is no answer. There is no answer.
He stands under the sun. Here under the sun must not be taken wrongfully. Under the sun is not direct object. This is prepositional phrase which we have already discussed in the same lecture earlier. He stands under the sun. Let's place what and whom with stand. What does he stand? वो क्या खड़ा होता है? Of course not. Whom does he stand? वो किसे खड़ा होता है? No, it does not make sense as well. That gives absolutely awkward meaning. So here the meanings are awkward and we do not need to answer. जब किसी चीज का सेंस ही नहीं बन रहा तो उसका आंसर तो ऑब्वियसली नहीं होगा. They went to the market. Here let me tell you yet again कि टू द मार्केट जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, डायरेक्शन है. तो यहां पर दे वेंट टू द मार्केट, इसके अंदर कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो व्हाट एंड होम जो है वो भी नहीं लगेंगे. मगर हम लगा के देखते हैं. व्हाट डिड दे गो? वो क्या गए थे? वी नेवर प्रैक्टिस, कभी सुना भी नहीं होगा गालिबन. होम डिड दे गो? वो किसे गए थे? किसके साथ गए थे तो हो सकता है, मगर उसके लिए प्रेपोजिशन लगेगा होम के अंदर, मगर वो फिर यार्डस्टिक नहीं रहेगा. होम इटसेल्फ इज अ यार्डस्टिक टू recognize whether the verb is transitive verb or intransitive verb. So दोनों जो सेंटेंस है, what did they go और whom did they go, ये बता रही हैं कि go जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं रखता, और जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं रखता तो what and whom भी नहीं लग सकते, और जब what and whom नहीं लग सकते तो उसका रिस्पॉन्स भी नहीं आ सकता. तो इधर क्या है, यहां पर go जो है that is also proven. I deliberately use go here क्योंकि go के साथ बहुत ज्यादा एम्बिग्यूटी होती है. बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, बट दिस इज इनफैक्ट intransitive verb and we have proven that go is intransitive verb and it cannot be used in passive voice at all. तो यहां पर जो है आपका go is intransitive verb, that is proven. The game is not over yet. हमने ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स पढ़े, मगर कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं विच एक्ट ट्रांजिटिवली एंड इनट्रांजिटिवली, जो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं. समटाइम्स दे टर्न ट्रांजिटिव वर्ब्स, समटाइम्स दे टर्न इनट्रांजिटिव वर्ब्स. परेशान नहीं होना, डोंट वरी. You are going to understand this as you would have understood transitive verbs and intransitive verbs. It looks to be a bit difficult to understand, but it's not that difficult if you get your presence of mind going. Some verbs act transitively as well as intransitive. अब यहां पर मैंने एग्जाम्पल दी, वर्ब तो हमारे पास एक ही है और वो है ग्रो. अब ग्रो जो है वो ट्रांजिटिवली भी फंक्शन करता है और इंट्रांजिटिवली भी फंक्शन करता है. चलिए दोनों को इस्तेमाल करते हैं. और आपको जो ये जो पिक्चर नजर आ रही है, ये जो पिक्चर्स हैं, ये दे विल आल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड वेल. ग्रो को पहले ट्रांजिटिवली इस्तेमाल करते हैं. द गार्डनर इज ग्रोइंग प्लांट्स. सो हियर ग्रो रिक्वायर्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. गार्डनर जो है वो पौधे लगा रहा है, तो इधर जो मतलब है ग्रो का वो है उगाना. उगाना, जब हम उगाना इस्तेमाल करते हैं उर्दू के अंदर, तो इसका मतलब ये होता है ये ट्रांजिटिव वर्ब है. इट रिक्वायर्स रिसीवर ऑफ द एक्शन. वो उगा रहा है, वो क्या उगा रहा है? वो पौधे उगा रहा है. ठीक है, तो यहां पर ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिवली इस्तेमाल हुआ. अब आ जाए इंट्रांजिटिव के अंदर. प्लांट्स आर ग्रोइंग स्लोली. डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. हियर स्लोली इज एडवर्ब. एडवर्ब आई टोल्ड यू एक्ट्स इन द मीनिंग ऑफ वर्ब. दिस इज नॉट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब यहां पर ग्रो का मतलब क्या है? उगना. जब हम उगना कहते हैं तो इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं. पौधे उग रहे हैं,
Does it need direct object? Of course not. Without direct object, it gives its full meaning. तो उगना जो है वो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया और उगाना जो है वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। इसी तरह ग्रो के एक मीनिंग है बढ़ाना और बढ़ना। जब हम बढ़ाने की बात करेंगे तो वो ट्रांजिटिव है। किस चीज को बढ़ाना? फॉर एग्जाम्पल, ही इज ग्रोइंग हिज कॉन्फिडेंस। तो इधर हिज कॉन्फिडेंस जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इधर बढ़ाने के मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा है ग्रो। और अगर मैं ये कहूं कि हिज कॉन्फिडेंस इज ग्रोइंग, अब यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। इट डज नॉट रिक्वायर रिसीवर ऑफ द एक्शन इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स सेंस। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। तो बढ़ाना ट्रांजिटिव, बढ़ना इंट्रांजिटिव, उगाना ट्रांजिटिव एंड उगना इंट्रांजिटिव। Let's have more examples. He flies a kite. Here, a kite is a direct object of fly. He flies a kite. वो पतंग उड़ाता है। तो इधर fly का मतलब क्या है? उड़ाना। मैं उर्दू में लिख रहा हूं ताकि आप आसानी से समझ जाएं। और दूसरी एग्जाम्पल में a kite flies in the air. Let me tell you again कि ये जो in the air है, in the air ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। तो यहां पर ये जो फ्लाई इस्तेमाल हो रहा है ये उड़ने के मीनिंग में आ रहा है, उड़ना। अ काइट फ्लाई ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ब्लो के। और इधर द विंड ब्लू द विद ग्रेट वेलोसिटी। सो हियर ग्रेट वेलोसिटी इज प्रेपोजिशनल फ्रेज, नॉट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। तो यहां पर जो ब्लो है वो इंट्रांजिटिवली एक्ट कर रहा है। और यहां पर जहां पर ड्राई लीव्स हैं, जो हमारी पिक्चर है उसमें देखें, द विंड ब्लू ड्राई लीव्स, तो ड्राई लीव्स को वो उड़ा रही है। तो ड्राई लीव्स जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इधर एक ब्लो जो है वो ट्रांजिटिवली इस्तेमाल हुआ और दूसरा ब्लो जो है वो इंट्रांजिटिवली इस्तेमाल हुआ। यानी कि वर्ब एक ही है, इट फंक्शंस ट्रांजिटिवली एंड intransitively as well according to our need. There are few words named ditransitive. Verbs can have two objects, direct object and indirect object. ज़्यादा मुश्किल नहीं। An indirect object indicates the person or thing that receives the direct object. Example देखें, he is giving me a piece of advice. अब यहां पर देखें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक मी है और एक अ पीस ऑफ एडवाइस है। बोथ ऑफ देम आर ऑब्जेक्ट। मी इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जबकि अ पीस ऑफ एडवाइस जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऐसे वर्ब को, जो वर्ब्स होते हैं जैसे यहां पर गिव है, इसको हम डायट्रांजिटिव कहते हैं। तो ही इज गिविंग मी अ पीस ऑफ एडवाइस। सो बेसिकली दे तो वो पीस ऑफ, सो सोल्ट जो है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो पास जो है वो डायट्रांजिटिव वर्ब हो गया। हियर कॉमन डायट्रांजिटिव वर्ब्स, कुछ वर्ब्स जो हैं कॉमन होते हैं डायट्रांजिटिव। बाय, ऑफर, असाइन, सेंड, शो, ब्रिंग, लैंड, पास, सेइंग, राइट। कुछ के एग्जाम्पल हम यहां पर ले लेते हैं। ही हैज ऑफर्ड हर अ जॉब। तो अ जॉब एंड हर, बोथ ऑफ देम आर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो हर जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अ जॉब जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। यहां पर शी शोज द पार्टिसिपेंट्स हर आर्ट वर्क। सो हर आर्ट वर्क इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेंट जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
The instructor has assigned me homework. So homework जो है वो, अब आप लोग बताइए कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? यस, यू गॉट इट राइट। होमवर्क जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई सेंट हर अ गेट वेल सून कार्ड। तो अ गेट वेल सून कार्ड जो है, कार्ड जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और किसको भेजा? हर को भेजा। तो हर क्या हुआ? वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। There is a big ambiguity. I hinted this in the middle of my lecture. Few people may confuse your mind with wrong examples. Like, वो जो intransitive verbs होते हैं उनको कहते हैं कि जी वो transitive verbs, उनको पैसिव स्ट्रक्चर में भी ढाल देते हैं और फिर वो जो है वो बताते हैं कि जी ये पैसिव स्ट्रक्चर है, देख लें आप पैसिव स्ट्रक्चर है या नहीं है, और ये जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब्स है, ऑल्दो दे आर इनफैक्ट इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो सबसे ज्यादा एम्बिग्यूटी जो होती है, वो कंफ्यूजन जो होती है, वो गो के साथ होती है। तो बाज लोग कहते हैं ही इज गॉन। आप देखें कि बी वर्ब भी आ रहा है इसमें, इज, और गॉन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी आ रही है, तो फॉर्मेशन तो पैसिव है, मगर दिस इज पैसिव फॉर्मेशन नहीं। जो यहां पर देखें, जब हम कहते हैं ही इज गॉन, तो गॉन हमने पहले ही प्रूव कर दिया कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, दैट कैन नॉट बी यूज्ड इन पैसिव वॉइस। तो किस तरह से यह इस्तेमाल हो रहा है? हाँ, ये फॉर्मेशन लगती जरूर। हियर गॉन जो है वो एडजेक्टिव है बेसिकली। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हैज टू फंक्शंस. It acts like past participle form and it acts like adjective as well. So here, go acts like adjective. This is not a verb. So verb is, as you can see through arrow. So he is gone. जब भी कभी कोई आपसे ये कहे he is gone, so he is gone जो है वो एक एक्टिव वॉइस है, मगर फॉर्मेशन ऐसी लगती है जैसे पैसिव वॉइस है। हियर यहां पर गॉन जो है वो पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म नहीं है, ये एडजेक्टिव है। इसी तरह दे आर टायर्ड, तो टायर्ड जो है वो एडजेक्टिव है और आर जो है वो वर्ब है, मेन वर्ब है। इधर जब वर्ब नहीं होता तो बी वर्ब जो है वो मेन वर्ब का काम करता है, दे आर टायर्ड। तो यहां पर भी जो है ये एक्टिव वॉइस। थर्ड एग्जाम्पल, ही हैज बीन टायर्ड। इधर डाइट जो है वो एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म नहीं है। लग जरूर रहा है कि ये पैसिव है क्योंकि फॉर्मेशन जो है वो पैसिव इस्तेमाल कर रहा है, मगर इधर एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है डाइट, एंड इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी पास्ट पार्टिसिपल। सो इट इज प्रूवन दैट दिस सेंटेंस इज ऑल्सो एक्टिव वॉइस। दे वर अराइव्ड, अराइव जो है वो भी इंट्रांजिटिव वर्ब है। जब इंट्रांजिटिव वर्ब है तो पैसिव में इस्तेमाल नहीं हो सकता, और अगर पैसिव लाइक फॉर्मेशन में इस्तेमाल हो रहा है तो वो एडजेक्टिव है, वो पास्ट पार्टिसिपल नहीं है, नॉट एट ऑल। यहां पर आपका मेन वर्ब जो है वो वर है, देवर अराइव्ड। सम पीपल प्रैक्टिस दिस, देवर अराइव्ड, दे आर अराइव्ड, दे हैव बीन अराइव्ड। सो ये दीज आर नॉट पैसिव। यहां पर जो अराइव्ड इस्तेमाल हुआ है ये थर्ड फॉर्म नहीं है, ये एडजेक्टिव। So I hope that you would have developed your understanding not only about active voice and passive voice, but also transitive verbs and intransitive verbs. If you listen this lecture attentively, you must be graduated at the end of the day. Now, there is a small drill. कुछ verbs जो है वो मैंने यहाँ accumulate किए हैं। कुछ वर्ब्स जो हैं वो ट्रांजिटिव हैं, कुछ इंट्रांजिटिव हैं, और कुछ जो हैं वो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। तो अब आपको यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि वो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं या इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, या वो ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव बोथ। कुछ मैं आपको बता देता हूं, एंड द रेस्ट ऑफ देम विल बी योर होमवर्क, एंड यूजिंग द सेम yardstick. In the beginning, it may take you some time to recognize, but if you put it into practice, the process quickens. The verb stay, think whether this is transitive verb or intransitive verb, or it acts both transitively and intransitively. Let me put it into example.
they are staying home. They are staying home. Stay, अगर इसके साथ आप what और whom लगाएं, what are they staying? वो क्या कयाम कर रहे हैं? No. Whom are they staying? वो किसे कयाम कर रहे हैं? किसके साथ तो हो सकता है वो, that is different ball game altogether. वो किसे कयाम कर रहे हैं? No, it does not make sense. This is rather nonsensical. तो यहां पर stay जो है वो intransitive verb, INT. अगर आप इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डिक्शनरी देखें तो वहां पर वर्ब के साथ INT और TRA लिखा होता है. सो INT signifies intransitive verb and TRA stands for transitive verb. Now let's go to second verb, begin. The match is beginning. The match is beginning and they are beginning the match. I have used the verb begin transitively and intransitively. The match is beginning, it does not require direct object. तो यहां पर ये intransitively एक्ट कर रहा है. और दूसरा सेंटेंस जो है दे आर बिगिनिंग द मैच, वो मैच शुरू कर रहे हैं. तो द मैच जो है वो इधर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यहां पर ट्रांजिटिवली. तो इधर क्या हुआ, ये बिगिन बोथ. अच्छा, अगर बिगिन जो है वो ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव बोथ है तो स्टार्ट भी ऐसे ही, क्योंकि बोथ ऑफ देम कम फ्रॉम द सेम फैमिली एंड दे आर सिनोनिमस टू ईच अदर. वॉमिट, द चाइल्ड इज वॉमिटिंग. Doesn't it complete sense? Yes, it gives complete sense. It does not need direct object. If we place what or whom, so it would become nonsense. So what is he vomiting? No. So this is intransitive verb. Scold. Who are you scolding? He is scolding his son. तो son क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो यहां पर क्या हुआ, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया. TRA, impress. He has impressed me a great deal. So me is direct object. TRA, transitive verb. Convert. What are you converting? Whom are you converting? Right? Transitive verb. It is used in passive voice. Laugh. If I say they are laughing, their friend. They are laughing at their friend. Here, at their friend is not direct object. This is prepositional phrase. If you place what or whom with laugh, what are you laughing? It does not make sense. So this is intransitive. INT. Occur. Occur and happen. Both of them are synonymous to each other. If occur is intransitive, so is the case with happen. So occur. इधर एक कंफ्यूजन है, लोग इसके साथ what लगा देते हैं. what फिट भी हो जाता है मगर सब्जेक्ट नहीं है. इसमें जरूरी है कि सब्जेक्ट होना in order to recognize whether the verb is transitive or intransitive. अगर मैं ये कहूं आपसे कि what is happening, it makes sense. What is occurring, it also makes sense. मगर इधर सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट के साथ what और whom लगना है. तो अगर आप इसके साथ what और whom लगाते हैं सब्जेक्ट के साथ, it would be awkward. What are you occurring? What is he occurring? Whom are you occurring? Whom are you happening? So this is intransitive. Do not get distracted. Open. The door is opening. Intransitive. It does not require direct object. He is opening the door. तो
खोलना जो है वो ट्रांजिटिव हो गया, खुलना जो है वो इंट्रांजिटिव। इसी तरह कम, व्हाट और whom लगाएं, फिट नहीं होता, दिस इज इंट्रांजिटिव। व्हाट आर यू कमिंग, नो नॉट एट ऑल, सो ये इंट्रांजिटिव हो गया। पब्लिश, न्यूज़पेपर्स आर पब्लिशिंग इंटरेस्टिंग न्यूज। सो इंटरेस्टिंग न्यूज जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और यहां पर ये ट्रांजिटिव हो गया। वॉक, शी इज वॉकिंग इन द पार्क, तो इन द पार्क इज नॉट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज prepositional फ्रेज। शी इज वॉकिंग, वो चल रही है, ये इंट्रांजिटिव है। एंड शी इज वॉकिंग हर डॉगी, वो अपने डॉगी को चहलकदमी करा रही है, तो ये इट प्लेस आइदर साइड, ये दोनों तरफ खेलता है। तो वॉक जो है ट्रांजिटिव भी है, इंट्रांजिटिव भी है। इसी तरह रन, ही इज रनिंग अ बिजनेस एंड बिजनेस इज रनिंग, वो बिजनेस चला रहा है और बिजनेस चल रहा है। तो चलाना जो है वो ट्रांजिटिव हो गया और चलना जो है वो इंट्रांजिटिव हो गया। वैनिश, सिनोनिमस ऑफ अपीयर, इंट्रांजिटिव। व्हाट इज अपीयरिंग, ये व्हाट इज अपीयरिंग कंफ्यूजिंग है क्योंकि इधर सब्जेक्ट नहीं है, तो जब सब्जेक्ट लगाएंगे इट गिव्स नॉनसेंस मीनिंग। सो ये क्या हो गया, इंट्रांजिटिव। क्राई, द बेबी इज क्राइंग, इट डज नॉट रिक्वायर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हाँ, ये तो हो सकता है कि द बेबी इज क्राइंग आउट लाउड, दिस इज prepositional फ्रेज, नॉट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये भी इंट्रांजिटिव हो गया। तो यहां तक तो मैंने आपकी हेल्प कर दी, ट्रांजिटिव वर्ब भी बता दिए, इंट्रांजिटिव भी बता दिए, एंड वो भी बता दिए जो वर्ब्स जो हैं जो दोनों तरफ खेलते हैं, ट्रांजिटिवली भी होते हैं और प्ले करते हैं और इंट्रांजिटिवली भी प्ले करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नाउ दिस विल बी योर होमवर्क। अब आप उसको व्हाट और whom के यार्डस्टिक में रखें, वो ऐसे टूल हैं जो आपको बता देंगे कि वर्ब ट्रांजिटिव है और या इंट्रांजिटिव है। Now, I'm sure that you are graduated in transitive verbs and intransitive verbs, provided you have listened this lecture attentively. Here, it's time to say bye-bye. Take care of yourself. Take care of yourself. Allah Hafiz.